Hello everybody. Our today's session is on the Marxist perspective of Indian national movement. And in this session, we will be first looking at the Marx theory of revolution, which is a very technical theory, very scientific theory. And then actually in this theory, Marx will talk about whether the revolutions will take place in the colonies or whether the revolution will take place in the European countries, and if revolution will not take place in the colonies, why it will not take place, and if it is going to take place in the European countries, then why it will take place in the European countries. Later in the second phase of the session, we will see that how his views differed with the views of Lenin when Lenin will step in, and Lenin will actually counter the Marx theory, and he will give his own theory to propose that revolutions are more easy in the colonies because it is more easy to mobilize the consciousness of the proletariat and the bourgeois in the colonies. And then he will propose two-stage revolution. One is the bourgeois-led revolution, and the other one is the proletariat-led revolution. And then in the climax, or in the third stage and the final stage of the video, we will talk about M. and Roy, who will actually differ with the Lenin, because of which he will defect with the Communist Party. And we will see the ideological journey of the M. and Roy also. But fundamentally, here we will focus that how his views differed with Lenin and why he was not conforming with the views of the Lenin and what will be the implications of this. And then later we will see that when he was kicked out from the Congress Party, then later we will see that when he was kicked out from the Communist Party, he will become a Congressee, he will join Congress, but there will be many hidden intentions of M. and Roy. Apart from the hidden intentions of M. and Roy, there will be many other reasons because of which M. and Roy will have to leave Congress, especially during the Second World War, when he will develop differences with the ideology of the Congress with respect to the polarization of World War, whether we should support the British or we should not support the British. All this kind of ideological differences will come out between the M. and Roy and the Congress, and he will leave Congress, and then he will shift to a new ideology which is known as new humanism. Initially he said it was new humanism, and later that new humanism became the radical humanism. So it is going to be a very interesting session, a very technical session also, but I will try my best to explain all the technicalities in the most simple language as it is possible to do so. So starting with the Marx, first let us see what was the Marx idea on revolution. So first I will talk about Marx only. So Marx says that it is not possible to do revolution in the weaker countries, in the colonies, because it is very difficult to mobilize the consciousness of the proletariats of the colonies. Why? He will give his own reasons, and rather he says that it is more easy and more practical and more scientific to do revolution, and which will be a proletariat revolution against the bourgeois in the European countries. So in simple language, he says that revolutions can be done only in the home country, that is the European country. So here you see what he talks about. He says that in order to do revolution, we need certain conditions. We need certain conditions to do revolution anywhere, whether it is home country or colony, European country, and all these conditions are sufficient and the necessary conditions to bring about the forces of consciousness, so that the forces of consciousness can be mobilized to protest against the bourgeois. But this cannot be done. If these conditions are missing, then we will be able to mobilize the consciousness against the bourgeois class. So it is possible only and only in certain conditions. So what is the condition number one he talks about? So you can see in the chart that in number one he says that revolutions can take place only in a capitalist mode of production, where there is a capitalist mode of production. And just not the capitalist mode of production, but apart from capitalist mode of production, the
it should be in a state of perfect competition. It should be in a state of perfect competition. Now try to understand, in perfect competition, it becomes very difficult among the players to manage the profit margin. So when the economy enters into a perfect competition, then every industrial house or factory houses or the companies will try to put more capital investment. Now why the companies or industrial houses or factory houses put more money in buying the machine? They introduce machines. Now what is the reason? Because introduction of the machine helps them to increase their profit margin. But how actually it works? So let us see what is the Marx idea. Marx says that the value of product is always the sum of C plus V plus S. What is C? C is the constant capital, means the capital which we are putting into the machine, that is the constant capital. V is the variable. For example, the wages we pay to the laborer or labor wages are variable. And S is the profit margin or the surplus value, but from where the profit is coming. So here he gives a very interesting analysis which will also help us to understand what is self-alienation. He says that whenever we contribute, whenever the factors of production are contributing in making a product, then labor is the only factor of production which contributes more than its value. Understand with a simple example. For example, we are making a biscuit. Now we have to buy milk, we have to buy sugar. Suppose the value of the milk is rupees 100. We bought 100 rupees milk. Now milk is going to add only 100 rupee in the value of the biscuit. Milk can never add more than the value of the milk. So what is the contribution of the milk in making a biscuit? Only 100 rupees. But suppose the labor charge is rupees 50. But labor will always contribute more than rupees 50. So this is what I am trying to say. This is in fact what Marx tried to say, that labor is the only force of production. Labor is the only force of production which adds fresh value to the product. And this fresh value is accumulated as a surplus and it goes into the pocket of the capitalist, which is known as the profit of the capitalist and which is known as the profit margin. Now why it is not going to the labor? Actually it belongs to the labor only. Labor has the first right on the fresh value, on the profit margin. Whenever a company generates profit, जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट बनाती है तो उस प्रॉफिट पर जो पहला हक है वो उसके लेबर का है, क्योंकि लेबर अगर फ्रेश वैल्यू ऐड नहीं करेगा तो प्रॉफिट का स्कोप ही नहीं है. So the scope of profit is created actually by the labor with the help of its fresh value, because labor is only contributing in generating additional value in the product, and it's only and only because of the laborer. And if you understand this formula, you can understand what is self-alienation. So what Marx is saying that labor becomes a self-alienated when a labor realizes that the value, the additional value which it is adding into the product is actually converting into the surplus value, and surplus value is actually converting into the profit. That means his efforts are actually giving more profit to the employer and it is not going into the pocket of the labor. So the moment the labor realizes this, the labor starts what? Labor stops adding the fresh value and he starts measuring his worth in terms of wages, which is known as a self-alienation. So what is self-alienation here? When labor stops adding fresh value and starts evaluating its worth in terms of wages. ऐसा पहले नहीं करता था लेबर. जब हम पहली बार कोई नौकरी करते हैं तो हमें लगता है हम अपना दिल, आत्मा, दिमाग सब लगा दें इसमें, और वो जो वैल्यू है जो प्रोडक्ट में जाके ऐड होती है उसका जो फायदा है, उससे जो फायदा होता है वो कैपिटलिस्ट अपने पॉकेट में रख लेता है, वो लेबर को नहीं देता है. क्योंकि अगर लेबर को वो प्रॉफिट का शेयर देने लगेगा तो लेबर अगले ही दिन जाकर के मालिक के सामने अपना दुकान खोल लेगा, अपनी कंपनी खोल लेगा. दिस इज द रीजन दैट व्हाई द कैपिटलिस्ट विल नॉट शेयर द प्रॉफिट विद द लेबर. एंड
व्हेन लेबर रियलाइजेस दिस ट्रूथ, जब इस लेबर को इस सत्य का अवगत हो जाता है, जब लेबर इस सत्य से अवगत हो जाता है, जब उसे सच्चाई पता चल जाती है, तो वो मेहनत करना बंद कर देता है। उसको लगता है मैं कितना भी करूंगा, मेरी एक मेहनत के दम पर कोई और अमीर बन रहा है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। मैं जब कंपनी में आया था तो कंपनी की जो एनुअल टर्नओवर थी 100 करोड़ है, आज 5 साल हो गए, कंपनी की तरक्की 10 गुना हो गई, मेरी तरक्की वहीं वहीं है। तो जब ये लेबर को रियलाइज होने लगता है कि उसकी तरक्की नहीं हो रही है और उसी के मेहनत की वजह से कंपनी की तरक्की हो रही है, तो लेबर मेहनत करना बंद कर देता है, लेबर क्रिएटिव वैल्यू ऐड करना बंद कर देता है। और जब लेबर क्रिएटिव वैल्यू बंद कर देता है, तो फिर लेबर अपनी जो वर्थ है वो वेजेस के टर्म में निकालता है। यानी जब हम सारे रिलेशन को पैसे के टर्म्स में तोलने लगते हैं, तो हम एलिनेट हो जाते हैं, डीह्यूमनाइज हो जाते हैं। यानी लेबर का जो प्रोडक्ट के साथ रिलेशन था, जो पहले क्रिएटिव रिलेशन था, अब वो रिलेशन क्रिएटिव ना होकर के मैकेनिकल हो गया है। सो दैट मीन्स labor relation with the product has become mechanical. That means he has become dehumanized, and he is trying to establish the relationship with his product in terms of money, that is known as monetization. So this is what I conclude here, that self alienation is actually the summation of dehumanization plus monetization. ये होता है, हम सब के साथ होता है जब हम हर चीज को पैसे के टर्म्स में तोलना शुरू कर देते हैं। बाप कौन अच्छा, तो ज्यादा पैसे जिसने हमारे ऊपर खर्च किया हो। भाई कौन अच्छा, जो पैसे से मदद करता हो। दोस्त कौन अच्छा, जो बार बार पैसे मांगने पे पैसा देता हो। तो हम हर चीज को जब पैसे में तोलने लगते हैं, तो इसका और एक स्टेज आता है जब हम अपने काम को भी पैसे में तोलने लगते हैं, अपनी भी कीमत पैसे में लगाने लगते हैं। दैट मीन्स वी हैव बिकम सेल्फ एलियनेटेड। हाउएवर, आई गेव यू द थ्योरी ऑफ सेल्फ एलियनेशन only in this part of theory of revolution to understand basically how this self alienation will fuel him to do revolution. But यहाँ पे हमें क्या समझना है, what we need to understand here, कि when we enter into a capital intensive economy, the C increases. और C के इंक्रीज करने से क्या होगा, जो लेबर पहले बिना मशीन के 5 शर्ट बनाता था, वही लेबर अब मशीन के साथ एक दिन में 10 शर्ट बनाएगा। लेबर की वेज वही रहेगी, तो फ्रेश वैल्यू बढ़ा या घटा, ऑब्वियसली बढ़ गया। दैट मीन्स फ्रेश वैल्यू इज इंक्रीजिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन। फ्रेश वैल्यू इंक्रीजेस, दैट मीन्स surplus will increase, but variable will decrease. That means wages will decrease. So that means at the same wage rate, the companies are making more and more profit only with the introduction of machine. So when you introduce machine, the company generates more profit, wages go down, and this will be followed by all the companies, all the industrial houses. Definitely this cannot be afforded by small players. तो जो छोटे मोटे कंपनी है वो बंद हो जाएगी, जो छोटा मोटा फैक्ट्री है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं है कि वो बड़े बड़े मशीन लगाए और अपनी प्रॉफिट को बढ़ाए। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे कंडीशंस में कुछ बड़े कंपनीज, बड़ी इंडस्ट्रीज का ही मोनोपोली होगा, और जब मोनोपोली हो जाएगा, सो स्मॉल प्लेयर्स विल बी वाइप्ड आउट। इसका मतलब प्रोडक्शन, ओवरऑल प्रोडक्शन विल डिक्रीज एंड वेजेस विल फर्दर गो डाउन। प्रोडक्शन नीचे जा रहा है, वेज भी नीचे जा रहा है, इन्फ्लेशन ऊपर होगा, राइट, और इकोनॉमिक क्राइसिस है। नाउ अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस द कॉन्शियसनेस, क्योंकि लेबर को यह पता चल चुका है कि उसके मेहनत का उसको नहीं, बल्कि उसके मेहनत के दम पे कोई और अमीर बन रहा है। पहले वो रिवॉल्यूशन नहीं करता था क्योंकि उसके पास कंपनी चेंज करने का या बहुत सारे ऑप्शंस होते थे, लेकिन चूंकि इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई है, मोनोपोली बड़े लोगों का है और कोई समाधान दिख नहीं रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में इन इंडस्ट्रियल लेबर्स का, जिनकी उनके कॉन्शियसनेस को मोबिलाइज करके बुर्जुआ के खिलाफ क्रांति की जा सकती है। दैट मीन्स द कॉन्शियसनेस ऑफ द प्रोलेटेरिएट कैन बी मोबिलाइज्ड टू टर्न इट and to revolt against the bourgeois community. But for all this to happen, what you need?
a capitalist mode of production, capital intensive economy, monopoly of big players, low wages, economic crisis? Do you think all these conditions are present in the colonies? So definitely all these conditions are not present in colonies, क्योंकि मार्क्स का ये मानना है कि कॉलोनीज में जो है वो मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं हुआ है, जिसकी वजह से न्यू प्रोलेटेरिएट क्लास नहीं आया है. सो द सोसाइटी इज नॉट डिवाइडेड इनटू बुर्जुआ एंड प्रोलेटेरिएट क्लास. देयरफॉर द कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल, consciousness of the people cannot be utilized or cannot be mobilized to do revolution against the bourgeois, because the society is not divided into, or the society is not divided into proletariat and bourgeois class because of feudal mode of production or because of the agrarian mode of production. The base structure has not changed. जो समाज का जो मुख्य ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेस स्ट्रक्चर है, वो जब तक कैपिटलिस्ट मोड में चेंज नहीं होगा, जब तक समाज बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट में नहीं बटेगा, तब तक क्रांति के कंडीशंस नहीं आएंगे. तो ये मार्क्स का मानना था कि चूंकि ऐसा कॉलोनीज में प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए कॉलोनीज में तो क्रांति की बात भूल जाइए. रैदर कॉलोनीज शुड फील दैट ब्रिटिश रूल is a blessing in disguise, because with the help of the Britishers they will modernize themselves, they will civilize themselves, they will develop the consciousness of oneness, and slowly with the passage of time, with the blessings of the British Empire or with the blessings of the British rule, they can aspire to become a nation state one day. एक दिन हो सकता है कि वो भी एक ब्रिटेन की तरह एक समृद्ध राज्य राष्ट्र बन जाए, लेकिन बिना ब्रिटेन के, बिना इंपीरियल फोर्सेस के मदद से यह संभव ही नहीं है कि कॉलोनीज में कोई क्रांति आएगी और कोई राष्ट्र बनाने की बात होगी. ये सब अगर संभव हुआ भी तो ओनली एंड ओनली विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स. सो ब्रिटिश रूल इज एक्चुअली ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. नाउ ऑल दिस थिंग्स, अगर ऐसी बात हो गई तो फिर तो एक्चुअली मार्क्स इज डीमोटिवेटिंग the wave of nationalism in the poor countries. So now Lenin will come, and Lenin will counter the viewpoint of Marx, and Lenin will say that Marx analysis is not totally correct. मार्क्स का ये मानना है कि पढ़े लिखे लोग ही क्रांति कर सकते हैं. जब उनको दिक्कत होती है तो वो आवाज उठाएंगे, जब तक उनको दिक्कत नहीं हो रही है, जब तक वो मैनेज कर रहे हैं चीजों को, जब तक एडजस्टमेंट की पॉसिबिलिटीज है, तब तक पढ़े लिखे लोग कुछ नहीं बोलते. लेकिन जब उनको लग जाता है कि अब कोई विकल्प नहीं है, तो फिर वो एक तगड़ा आंदोलन करते हैं, और ये पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं. ये गरीब लोगों के पास, जो अनसिविलाइज्ड लोग हैं, कॉलोनीज में जो लोग हैं, उनके लिए संभव नहीं है. लेनिन ने इसको काउंटर किया, और लेनिन का यह मानना था कॉलोनीज में इट इज मोर इजी, जो गरीब मुल्क हैं, जो सो कॉल्ड सिविलाइज्ड नहीं हैं, उनसे क्रांति करवाना ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन विद द इंडस्ट्रियलिस्ट और इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी. तो अमीर लोगों से ज्यादा कैपेबिलिटी, या पढ़े लिखे लोगों से, समृद्ध लोगों से ज्यादा कैपेबिलिटी है गरीब लोगों को इकट्ठा करके क्रांति करवाना. जबकि मार्क्स का क्या मानना है कि जो पढ़े लिखे शिक्षित समझदार लोग हैं वही आंदोलन कर सकते हैं, उन्हीं से संभव है कि आइडियोलॉजी के आधार पर वो कोई क्रांति करे. जो गरीब लोग हैं, जो अनपढ़ हैं, उनके लिए यह संभव बात नहीं है. क्रांति करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिना आइडियोलॉजी के कोई क्रांति संभव नहीं है. लेनिन इस थ्योरी को रिजेक्ट करेंगे, और लेनिन का मानना है कि यूरोप में क्रांति करना ज्यादा मुश्किल है. सो लेनिन विल एक्चुअली से दैट इट इज मोर डिफिकल्ट टू डू रिवॉल्यूशन in European countries. Why? Because Marx feels that revolution can be done in advanced countries, in industrialized countries, in capital intensive when there is economic crisis. यानी जब आर्थिक संकट आएगा, when there will be economic crisis, then only you can mobilize the consciousness of the educated people and mobilize the consciousness of the proletariat of the prosperous country to revolt against the bourgeois class.
But if there will be no economic crisis, this is what Lenin says. And Lenin says it is very difficult, because Lenin का काम क्या है, Lenin का व्यू पॉइंट क्या है कि जो एडवांस्ड कंट्रीज हैं उनमें इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है. क्यों है? क्योंकि एडवांस्ड कंट्रीज, होम कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज की जो गाड़ी है, जो ग्रोथ इंजन है, वो कॉलोनीज है. वो कॉलोनीज को चूसते हैं, कॉलोनीज से कमाते हैं, अपने देश में लगाते हैं. सो एज लॉन्ग एज द ड्रेन ऑफ वेल्थ is moving or taking place between the colonies and the home country, there is not going to be economic crisis in the home country. और आर्थिक संकट जब तक दिक्कत नहीं होगी तब तक आंदोलन नहीं होगा, तब तक क्रांति नहीं होगी. तो यूरोप में कभी दिक्कत होगी ही नहीं, क्योंकि कॉलोनीज को चूज करके, कॉलोनीज को लूट करके यूरोप बनाया जा रहा है. और ये कॉलोनीज को लूटते रहेंगे, जब तक लूटते रहेंगे तब तक यूरोप में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है. और यूरोप में दिक्कत आएगी नहीं, यूरोप के लोग क्रांति करेंगे नहीं. लेकिन यहां संभव है, क्योंकि यहां लोग ज्यादा दिक्कत में हैं, कॉलोनीज में लोग ज्यादा दिक्कत में हैं. और मार्क्स का जो ये मानना है कि बेस स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है, यानी कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं हुआ है, ये पूरी तरीके से सही बात नहीं है. हां, ये हम मान सकते हैं कि पूरी तरीके से बेस स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है, लेकिन पार्शियली चेंज हुआ है. और पार्शियली बेस स्ट्रक्चर चेंज हुआ है मतलब भारत जैसे लोग में, चीन में, द पार्शियली द मोड ऑफ प्रोडक्शन इज फ्यूडलिस्टिक एंड एग्रीगेरियन, एंड पार्शियली द मोड ऑफ प्रोडक्शन इज capitalistic. And because of this partial change in the base structure, new classes have emerged. Doctors have emerged, lawyers have emerged, bureaucrats have emerged, Indian judges have emerged, peasants, clerks, different classes have emerged. यानी इंडियंस में भी कॉलोनियल बुर्जुआ और कॉलोनियल प्रोलेटेरिएट हो चुका है, स्ट्रैटिफिकेशन हो चुकी है, पूरी तरीके से पार्शियल स्ट्रैटिफिकेशन है. और चूंकि पार्शियली ये स्ट्रैटिफाइड कम्युनिटी है, स्ट्रैटिफाइड कम्युनिटी नहीं, स्ट्रैटिफाइड क्लास है, लेकिन इनके अंदर में कॉन्शियसनेस कॉमन क्लास का है. ये क्यों है? तो ये लेनिन ने एक्सप्रेस किया कि ये आपस में क्लास में बट तो गए हैं, लेकिन इनको मालूम नहीं है कि ये अलग अलग क्लास हैं. क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये है कि सेकेंडरी कॉन्ट्राडिक्शन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द प्राइमरी कॉन्ट्राडिक्शन. अब ये क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में ये समझना है कि जो कॉलोनीज में बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट हैं, इनके आपस में भी कुछ मतभेद है, लेकिन इनके आपस का मतभेद उतना स्ट्रॉन्गर नहीं है जितना मतभेद इनका अंग्रेजों के साथ है, यानी इंपीरियल बुर्जुआ. यानी अगर भारत के समाज को देखा जाए, इंडिया के सोसाइटी को इवेल्युएट किया जाए लेनिन की नजरों से, सो व्हाट लेनिन विल से दैट देयर इज वन इंपीरियल बुर्जुआ, colonial bourgeois and colonial proletariat. The differences between the colonial bourgeois and colonial proletariat is known as secondary contradiction. But the primary contradiction is between the imperial bourgeois and the colonies. That means CB, which is colonial bourgeois, and CP, which is colonial proletariat. They will come together and they will behave as single class. Are we understanding this? No matter they are different classes, they have been partially stratified, but they do not have the consciousness of different classes because of the weaker contradiction. Although the conflict of interest is there, but the conflict of interest is not so much strong to separate them. Rather, the primary contradictions are more stronger. Their differences with the Britishers are more stronger, and these differences are pressurizing them to behave as one class. They will come together and they will do the revolt against the imperial bourgeois. So the revolution is going to take place in two phases. In the first phase, all of them will come together to fight against the Britisher, because Britisher is behaving like an imperial bourgeois here. And after that, in the second phase, when they will kick out the Britisher, then the colonial proletariat, this colonial proletariat will do a second revolution against the colonial bourgeois. So what will be the implication of this analysis? What the Lenin is trying to say, that is very simple. Lenin says that in colonies there is bourgeois party and proletariat parties are there. So in the first stage, the proletariat party should support the bourgeois party. मतलब
मतलब जैसे भारत में कांग्रेस है तो कांग्रेस बुजवाओं की पार्टी है, और कांग्रेस के अलावा भी कुछ किसानों की पार्टी है, कुछ पीजेंट्स की पार्टी है, ट्रेड यूनियन की पार्टी है। तो इन सारे पार्टीज को कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए। दैट मीन्स लेनिन का यह मानना है कि इन दिस स्ट्रगल all the parties should come together and support the Congress party as a implication of his theory, because all the parties are colonial proletariat. Congress is the colonial bourgeois. ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये सिर्फ भारत के लिए कहा, उन्होंने चीन के लिए भी यही कहा। जब चीन में सन यट सेन गुजर गए और काइचेन सेक आए तो उन्होंने कहा कि चीन की जो मेन पार्टी है, जो सत्ता में है, वो एक तरह की बुजवा पार्टी है और बाकी सारे पार्टीज को बुजवा पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए ताकि फॉरेनर्स को वहां से खदेड़ा जाए। और बाद में when we all will be successful in kicking out the Britisher, तब सारी पार्टी को मिल करके कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए, कांग्रेस के खिलाफ क्रांति करनी चाहिए। अगर हम इसे भारत में इस मॉडल को अप्लाई करेंगे तो इसका यह मतलब होगा कि अभी हमें सबको मिल करके अंग्रेजों को भगाओ, जब अंग्रेज चले जाएंगे तब सब मिल करके कांग्रेस को दबाएंगे। अगर मुझे ये रिलेट करना होगा तो आई विल रिलेट दिस विद द नक्सल मूवमेंट और नक्सल रेबेलियन which took place after the independence, because during the independence or even at the time of independence almost all the parties supported Congress except the Muslim League party and one or two more other parties. Otherwise all the parties were with their Congress. But 1947 के बाद कांग्रेस के अंदर में से समाजवादी दल जो है वो निकल जाते हैं। जो कम्युनिस्ट पार्टी जिनको समर्थन था, बहुत समर्थन किया था, हैदराबाद के इंटीग्रेशन में भी कम्युनिस्ट पार्टी ने सपोर्ट किया था, ऐसी बात नहीं है। जो वहां क्रांति लाई गई थी किसानों की, कांग्रेस ने कम्युनिस्ट का ही इस्तेमाल किया था। कांग्रेस ने बहुत सारे और मामलों में भी कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, यहां तक कि कुछ जो रिलीजन बेस्ड पार्टीज थे उनका भी समर्थन लिया था। लेकिन जैसे ही भारत को आजादी मिलती है, कांग्रेस को सत्ता दी जाती है, तो फिर कांग्रेस को जिन पार्टियों का समर्थन था वो पार्टी धीरे धीरे कांग्रेस से अलग हो जाती है। ये सेकंड फेज ऑफ रिवॉल्यूशन को सिग्निफाई करता है एज प्रिस्क्राइब्ड बाय लेनिन। डेफिनेटली लेनिन वाज इन द सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस, बट हियर व्हाट विल हैपन, यस, हियर द व्यूज ऑफ द लेनिन will not be accepted by our Indian hero, and that is M.N. Roy. And why I am saying hero to him I will explain later when I will try to highlight the last phase of his ideological journey, when he actually founded the principles of radical humanism, which will actually work as a lighthouse for the you can say the prosperous journey of modern India. So I will come to that, but let's first understand about M.N. Roy. Now this M.N. Roy is a character who changed his mind so many times, which you can say that he was fickling or he was more evolved in nature. That's why he kept on changing his ideology along with the passage of the national movement. So initially when he embarked on the journey of this nationalism, so he was like a normal Bengali, like a typical Bengali. He also believed in the principles of revolutionary and individual heroism, and he believed in the revolutionary methods. But later on he became communist. He joined communist. In fact, he founded the Communist Party of India, and before that Communist Party of Mexico. And he was a very tall leader of the Communist Party. He met with the Lenin, and Lenin gave him some responsibilities to lead the communist movement in the China. So he was not only responsible for India, but he was also responsible for China. But when Lenin started focusing that Communist Party should encourage all other proletariat party to support the bourgeois party in the colonies, he became little bit rattled with the Lenin, and because of his differences with the Lenin, because Lenin was having a very high stature in the party. किसी की औकात नहीं थी कि लेनिन के खिलाफ बात करे, और लेनिन के खिलाफ M.N. रॉय इंडिया से बात करेंगे जिनका कद लेनिन के बराबर तो नहीं था, तो उन्हें पार्टी छोड़ना पड़ेगा या पार्टी से उनको निकाला गया। दिस इज ए मैटर ऑफ डिबेट। एनीवेज, नाउ वी कम टू द पॉइंट that what was his understanding, as long as he was in the Communist Party, what was the understanding of the Lenin? So Lenin said
that we should not support the bourgeois party. Revolution should not be in two phases. Rather, the revolution should always be in one phase, and all the proletariat should come together to protest and revolt against all the bourgeois. So it's not like black bourgeois, black proletariat, white proletariat. Proletariat is proletariat, bourgeois is bourgeois. So the colonial proletariat should not compromise with the colonial bourgeois, and they should revolt against both colonial bourgeois and the imperial bourgeois. So what can be said here, what basically M. Roy is trying to focus, that colonial proletariat should fight against IB plus CB, that is imperial bourgeois plus colonial bourgeois. So what he is saying, that the proletariat, what will be the implication of this, that proletariat should not support Congress. Very interesting. So he was not in the favor of supporting Congress. Later, because of his differences with the Lenin, he will be kicked out and he will defect from the Communist Party and he will join Congress Party. And as long as he will be in the Congress Party, his actual and hidden intention to join Congress was to hijack the ideology of the Congress, because Congress was having a wide mass base. And he thought that if I will radicalize this mass base of the Congress, which is active even at the root level, that is at the village level, then definitely if the entire Indian mass gets radicalized, then we don't need to take even a single gun to kick the Britisher out. The Britishers will themselves leave the country, because Britishers will become more vulnerable. So instead of becoming we as vulnerable, Britishers are less in number, we are more in number. The only thing is that we need a radical hero or radical leader with a radical mass base. So as long as radical mass base is there and the leader is radical, we are not going to compromise with the Britisher, and there should be, we should kick the Britisher out. Anyways, later during the, although his hidden intentions were, you can say, it was already doubted by the Congress leader. And apart from this reason, there were other reasons also during the Second World War. Because during the Second World War, the Britishers posed such a picture that Indians should support Britisher, because Britishers are the brand ambassadors of democracy, and this world war is actually between the two camp, Democrats versus fascist. And if India does not support the Britisher, that means India is itself an anti-democracy, it's not supporting democracy and supporting the fascist forces. And the irony is that the Britishers are appealing to Indians on the moral basis to support Britisher for the sake of protecting the democratic values, when Indians are themselves the subjects. So this is what the M. Roy is saying, that this is the best time to bargain with the Britisher, because if Britishers are expecting us to join their cause of democracy, then they should first make India a democratic country and devolve all the power and transfer all the power to Indians. However, this was just not the only reason which will motivate the M. Roy to switch and shift to a different ideology of radical humanism. He realized during the Second World War that all ideologies have failed. Post-Renaissance, all modern ideologies came on the pretext of liberating individual, emancipating individual. So humanism is the foundation of modernity, and all modern ideologies which will come on the pretext of protecting the individual, on the pretext of liberating the individual, will ask the individuals and humans to sacrifice their basic creativity in lieu of some lofty and utopian goals. So he said that all ideologies have dehumanized the human being. How? Because the basic nature of the human being is to be creative. Creativity is the basic essence of human being. Although I am not going to make a detailed analysis of radical humanism of M. Roy, but obviously I will talk about, I will give a brief understanding of what radical humanism is. So what he is trying to say, he is basically trying to say that all ideologies, whether it is Marxism or socialism or liberalism, they have violated the principles of individual freedom. They have taken away the freedom of individual. They have pressurized the individuals to become the slave of their ideology. For example, nationalism on the pretext of protecting the nation
is asking the individuals to sacrifice. And sacrifice what? Sacrifice the individual's creativity to solve any problem in creative manner. You have to, if you say anything against the government, you will be called anti-national, which is currently also many scholars are putting such allegations on our current or contemporary government that if you talk against the government means you are anti-national. And this is actually taking away the creativity, the space for creativity. That means you are taking away the capability of the individual to give creative solutions to any problem of society, whether those problems are local problem or a national problem or international problem. Similarly, Marxism, on the pretext of ensuring equality, is taking away the creativity of individual. Similarly, liberalism or democracy, in the name of public interest, it is taking away the individual dignity and individual freedom to think on the pretext of the public interest. So what M. Roy is saying, M. Roy, I will relate M. Roy with Amartya Sen and John Rawls also. As John Rawls says, now try to understand, develop a basic understanding of M. Roy. You can easily understand M. Roy if you connect him with John Rawls. So what John Rawls says, that every person has the moral capability to make fair rules of the society. If they fairly discuss, if they make a fair discussion, fair arguments, do fair reasoning, they can make a fair contract and fair rules, that we all can make a just society, a fair society, if the contract is fair. And contract will be fair only in certain conditions of original position and wheel of ignorance. That if every individual is behind the wheel of ignorance, means he is not aware of certain things which makes him unethical or unfair. And if the individual has achieved the conditions of original position, अगर आप original position के शर्तों को पूरा करते हैं और wheel of ignorance के शर्तों को पूरा करते हैं contract में आने से पहले, तो जो भी डिस्कशंस होंगे और उससे जो भी रूल्स बनेंगे वो फेयर होंगे। एम एन रॉय भी यही कहते हैं कि अगर हर इंसान क्रिएटिव तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, हम सब मिल करके, कोई जरूरी नहीं है कि हम मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी पे चल करके ही दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे, या कोई जरूरी नहीं है कि हम डेमोक्रेसी के रास्ते पे ही चल करके दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं, या हम राष्ट्रवाद के ही रास्ते पे चल करके सब कुछ सही कर सकते हैं। क्योंकि आइडियोलॉजी जो है वो हमारी क्रिएटिविटी को खत्म करता है और एक क्रिएटिव, और हमें हमेशा हमारे ऊपर एक प्रेशर देता है कि हमें एक इसी पर्टिकुलर तरीके से सोचना है, जबकि हम जानते हैं कि कोई भी आइडियोलॉजी अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं होती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने यह प्रूव कर दिया कि ना राष्ट्रवाद सबसे सुप्रीम है, ना डेमोक्रेसी सबसे सुप्रीम है, ना इंपीरियलिज्म, ना लिबरलिज्म, ना मार्क्सिज्म। सो सारी आइडियोलॉजी हमको हमारी सोचने की शक्ति को खत्म करती है, जिसकी वजह से हम फेयर रूल्स नहीं बना सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को हम एक क्रिएटिव सॉल्यूशन दें, तो उसके लिए जरूरी क्या है कि हर इंडिविजुअल डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करे, एक्चुअली में पार्टिसिपेट करे और क्रिएटिव सॉल्यूशन दे। लेकिन हम क्रिएटिव सॉल्यूशन कब दे सकते हैं? दिस इज व्हाट ही टॉक्स अबाउट मैक्सिमाइजिंग द लिबर्टी ऑफ एवरी इंडिविजुअल सो दैट एवरी इंडिविजुअल हैज मैक्सिमम फ्रीडम टू ऑपरेट इन ए सोवरेन लैंडस्केप, कि हर व्यक्ति सोवरेन हो सोच के मामले में, उसकी सोच को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। अगर हमारी सोच को कोई कंट्रोल नहीं करेगा और हम सब फ्री होकर डिस्कस करेंगे तो हम एक क्रिएटिव सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है क्या है? 3 कंडीशन। सबसे पहले, एवरी इंडिविजुअल शुड बी मोरल। बट ये मोरालिटी वो रिलीजन वाली मोरालिटी नहीं है। सो व्हाट डज ही से? He says that we all can discuss directly and we all can do creative discussions to make a creative world where all the problems will be solved in creative style, but only when we all are morally equal. But how we will become morally equal? In order to become
morally equal to give creative solution, we should be rational. So he says that first our basic material needs should be satisfied. That is the first condition. He makes a triangle and he talks about that materialism, reason, and morality. These are the three basic elements of humanism. That's why this is new humanism, because the composition of humanism is different as explained by post-Renaissance schools of ideology. ये कहते हैं कि जो न्यू ह्यूमनिज्म है उसके तीन कंपोनेंट्स हैं, जबकि पुराने वाले ह्यूमनिज्म में ये तीनों कंपोनेंट नहीं थे. ये कहते हैं तीन कंपोनेंट होना चाहिए. सबसे पहले वो थोड़ा बहुत मेटेरियलिस्टिक भी हो. अगर मेटेरियलिस्टिक है, बेसिक नीड्स सेटिस्फाई हो गए हैं, तो वो रैशनल बनेगा. लेकिन कैसा रैशनल? न्यू रैशनल. अगर आपके बेसिक नीड्स सेटिस्फाई हो जाते हैं और उसके बाद अगर फैमिली, कल्चर, ट्रेडिशन, सोसाइटी, सरकार, आइडियोलॉजी, इन सब का आपके ऊपर अगर कोई दबाव नहीं है, तो आप मोरली ऑब्लाइज्ड होंगे क्रिएटिव सॉल्यूशन देने के लिए. सो वी ऑल हैव द मोरल ऑब्लिगेशन टू गिव creative solutions, to think in a creative manner, where we are free from the fear of what? Fear of losing our existence. So this is what he says, self is prior to end, right? कि ऐसा ना हो कि हमें अपने सर्वाइवल को लेकर के बेसिक सिक्योरिटी होनी चाहिए, इसीलिए ये स्टेट का काम है. दैट्स व्हाई ही विल टॉक अबाउट पार्शियल नेशनलाइजेशन, कि नेशनलाइजेशन वहीं तक होना चाहिए जब तक हमारे बेसिक नीड्स सेटिस्फाई नहीं हो जाते. एक बार बेसिक नीड्स सेटिस्फाई हो गए तो ओवर नेशनलाइजेशन या एब्सोल्यूट नेशनलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है. तो नेशनलाइजेशन वहीं तक हो जहां तक हमारे मटेरियल कंडीशंस सिक्योर हो जाते हैं और हमें इस बात का डर नहीं है कि कल को हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहां रहेंगे. ये बेसिक नीड्स का जो डर है, कुछ खोने का डर नहीं होना चाहिए, मरने का डर नहीं होना चाहिए, रोड पे आने का डर नहीं होना चाहिए. और उसके बाद हम रैशनल होने के प्रोसेस में आते हैं. तो फ्रीडम एक प्रोसेस है. फ्रीडम जो है वो एक प्रोसेस से आता है. ऐसे नहीं कि फ्रीडम किसी ने आपको ट्रांसफर कर दिया और आप फ्री हो जाएंगे. एक प्रोसेस से आएगा जिसमें पहले आप अपने मटेरियल कंडीशंस को सिक्योर करेंगे और उसके बाद आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए अपने परिवार का कि तुम्हें यही करना है, तुम्हें आईएएस ही बनना है, राइट. ना समाज का कोई दबाव होना चाहिए, ना परंपराओं का कोई दबाव होना चाहिए, ना किसी कस्टम का दबाव होना चाहिए, ना किसी सरकारी संस्था का दबाव होना चाहिए कि आपको ऐसे ही जिंदगी जीनी है, ऐसे ही सोचना है, ना कोई राजनीतिक आइडियोलॉजी या विचारधारा का दबाव होना चाहिए. जब हमारे अंदर विचारधारा का दबाव नहीं होगा, सरकारी किसी संस्था का दबाव नहीं होगा, परिवार का दबाव नहीं होगा और हमारे बेसिक नीड्स को लेकर के हम सिक्योर्ड हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम इतने मोरल हो जाते हैं that we have the intrinsic, human beings have the innate tendency to give creative solution in particular circumstances, just like John Rawls has said कि if certain conditions are satisfied, we all can make fair contract. तो एमन रॉय को अगर आप कंपेयर करोगे जॉन रॉल्स से, तो एमन रॉय भी यही कहते हैं, if certain conditions are satisfied, then we all can come together, sit, do discussions, right? Directly discussion, and using that discussion, we will be able to collectively give a creative solution to the problems of society. And here we can relate with Amartya Sen also. When Amartya Sen talks about less institutional reforms and more on public reasoning, that we cannot solve our problems by making institutional reforms in some bureaucratic machinery or government machinery. Planning commission को नीति आयोग बना देने से भारत की गरीबी दूर नहीं होगी. भारत की गरीबी दूर करने के लिए जो गरीब लोग हैं उनके साथ बैठ करके आपको बात करना होगा, और चुनावी मसले के लिए नहीं बल्कि वास्तविक स्थिति बदलने के लिए आपको वहां जाना होगा, उनके साथ बातचीत करनी होगी, उनकी समस्या को समझना होगा, उनको पूरी आजादी देनी होगी कि वो अपनी बात करें, और वो जो रास्ता दिखा रहे हैं उस पर चलने के लिए जो संसाधन की जरूरत है वो सरकार का काम है कि वो मुहैया करवाए.
जिसको वो पब्लिक रीजनिंग का नाम देते हैं, डिस्कशंस का नाम देते हैं, कि डिबेट्स होने चाहिए, डिस्कशंस होने चाहिए समस्या के ऊपर, और चुनावी मकसद के लिए नहीं बल्कि फंक्शनिंग यानी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, विच ही गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ फंक्शनिंग। तो कि हर व्यक्ति की फंक्शनिंग को कैसे इंक्रीज की जाए, इसको लेकर के जब तक फोकस्ड अप्रोच नहीं होगा, तो यही अमर्त्य सेन और जॉन रॉल्स के अप्रोच से जैसे आप चलते हो उनको समझने के लिए, अगर उसी अप्रोच को हम फॉलो करें तो इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द रेडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव। अब सवाल है कि इसे रेडिकल क्यों कहते हैं? रेडिकल उसको कहते हैं जो आपकी बात नहीं मानता है। तो जो कम्युनिस्ट की बात नहीं मानता है, जो किसी की बात नहीं मानता है, तो ना वो नेशनलिस्ट स्कूल की बात मानता है, ना वो स्पिरिचुअल स्कूल की बात मानता है कि यहां पर गॉड के प्रेशर में आप इंसान के क्रिएटिविटी को खत्म कर देते हो, तो इसीलिए वो स्पिरिचुअलिज्म के भी खिलाफ है। इसीलिए एम एन रॉय को परफेक्ट सेक्युलर भी कहा जाता है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल फोर्सेस कहते हैं कि जब हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो फिर हर चीज को हम उसी से रिलेट करने लगते हैं, और गॉड के प्रिटेक्स्ट में हमारी जो क्रिएटिविटी है वो खत्म हो जाती है, गॉड के प्रिटेक्स्ट में। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रिटेक्स्ट ऑफ द गॉड वी लूज अवर क्रिएटिविटी। So he is not conforming with anybody. He is not agreeing with any ideology. किसी भी आइडियोलॉजी ने जो भी रास्ता दिया वो किसी रास्ते पे चलने के लिए तैयार नहीं है। तो जो किसी की बात नहीं माने हम उसे रेडिकल कहते हैं। तो दैट्स व्हाई इज रेडिकल। ह्यूमनिस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन को सेंटर में रख करके ह्यूमन के क्रिएटिविटी को, ह्यूमन को इतना सोवरेन कर दे कि वो फ्रीली अपनी बात कर सके और फ्रीली हर चीज के क्रिएटिव सॉल्यूशन को देने के लिए वो मोटिवेटेड रहे। इसीलिए उसे ह्यूमनिज्म कहा जाता है। न्यू ह्यूमनिज्म क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने ह्यूमन की एक नई परिभाषा दे दी, नया नेचर बताया। क्योंकि इसके पहले जितने भी स्कॉलर्स थे पोस्ट नासा के, किसी ने कहा ह्यूमन बहुत अच्छा होता है, किसी ने कहा इंसान जानवर के जैसा होता है, लेकिन ये कहते हैं कि इंसान का एक ट्रू नेचर जो है, जो ट्रू नेचर इन्होंने एक्सप्लेन किया, दैट वाज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर स्कॉलर्स। एंड ही सेड ह्यूमन बीइंग्स आर नीदर गुड बैड, ह्यूमन बीइंग्स आर ऑलवेज क्रिएटिव provided certain conditions are satisfied. So you cannot say that they are good or bad, they are always creative, means they always want to, they are always and continuously in the quest to gather knowledge about the nature, because human being always wants to secure itself and it cannot ensure, it cannot guarantee its survival until and unless he is assured of the perfect knowledge. So he is always in the quest of truth. So why he wants truth? Because he wants to survive himself. And in order to know the truth of this world, this physical world, social world, political world, he needs to be creative, because without being creative, we cannot gather knowledge. So this is the true nature of human being. And human being will be able to live his true nature if certain conditions of materialism, rationality and morality is satisfied. So if you follow the path in this manner, you will become a creative man. So his fundamental objective and the final objective is to make human being a creative man. So I hope this discussion was almost quite, if not brief, if not elaborative, it can be between both of them. It was neither too much in detail, nor too much precise, but definitely the purpose of this lecture is to create awareness among the aspirants to understand political science, understand the importance of political science, and why political science should be a probable option for civil services exam. So we will come up with more sessions like this. In our next session, we will definitely talk more on radical humanism, and I will talk about the detailed journey of M. N. Roy, because that is very important. वैसे भी important है और civil services के लिए भी important है. So we will definitely do that. And thank you so much to all of you.